मैं जब दिल्ली में आया नया नया मैंने काम करना शुरू किया तो सैलरी कुछ नहीं थी, 2612 रुपए सैलरी थी 98 में। तो मोती बाग में रहते थे, फिर मोती बाग गुरुद्वारे जाना पड़ता था 15 तरीक के, पैसे नहीं बचते थे रोटी के लिए। फिर वहां पर धीरे धीरे लाइन में लगने के बाद शर्म आने लगी कि रणवीर ब्रार तुम शेफ हो, कब तक ऐसे खाओगे फ्री में गुरुद्वारे जाके। फिर हमने वहां पे लंगर बनाना शुरू कर दिया अपने ऑफ डेज। तो देयर इज ऑलवेज बीन दैट कनेक्शन टू द लंगर। हर पंजाबी मॉम जो है वो एक्सपर्ट होती है रिसाइकलिंग में। रात को जो भी बचता है वो सुबह पराठे में फिट होके चुपचाप आ जाता है मसाले मसूले डाल के। डैड, वी हैव वेरी पंजाबी सन फादर सन रिलेशनशिप व्हिच इज वेरी हाँ जी पापा जी रिलेशनशिप ना, you don't really talk much to your dad. So dad, I just he didn't say anything. He राजमा खा लिया पूरा और बाद में मैं जब साफ करा तो अंदर मॉम के पास गए तो कहते रोटी बना लेना है कंजर। Hollandaise, right? The sauce. So the most common Punjabi pronunciation that I get is वो Hollandaise देना, जरा Hollandaise. You know, like Holland the country has to come first. Such a Punjabi obsession with fairness, I tell you. मतलब चाय मत पियो काले हो जाओगे, हैं केसर वाला दूध पियो गोरे हो जाओगे। ये गोरे काले वाला पंजाबियों ने बड़ा काम खराब किया हुआ है। All our elders had been eating देसी घी forever. साउथ में कोकोनट ऑयल और नॉर्थ में देसी घी, वो उनको तो कभी कोई बीमारी नहीं हुई। They lived healthy, happy. तो how is it possible that देसी घी is unhealthy for us? So Ranveer Brar is with us, and it's World Health Day today. We're going to be talking to Chef about certain myths around food that need to be busted, and also, you know, how life has changed for Ranveer in the past 1 year. So thank you, Ranveer, for your time today. How have you been? Well, it's my pleasure being here, and I'm extremely excited and happy to be here, and I look forward to a lot of fun. And I look forward to a lot of myth busting, especially when it comes to food and health, and it's going to be exciting. You know, in the last 1 year, there's been so much, you know, that we've faced. There's been pandemic, then, you know, the entire period of lockdown. Now the vaccines have been rolled out. So it's been a year of hope and faith. How has it been for you? Well, for me, it has been a year of, I'd say a lot of inward thinking. It's been a year where you've been actually, like everybody, I've been questioning a lot of normals. You know, I've been questioning a lot of things which I just thought were the way they were. And I think lockdown has sort of, or this period has shown us that a lot of things that we thought were important aren't really important. So I've been doing my own set of thinking. Also, I've gotten a chance to cook at home. You know, and that's a big difference for a guy. I mean, I used to take 200 plus flights a year, right? So for somebody like me to stay at home for 200 days, you know, and cook at home has been a big blessing, because in your kitchen, in your home kitchen, you get the time to think, to reflect, to hone, to fine tune, to give meaning to what you do in the kitchen. Right. तो अभी की किचन की बात हो रही है, पहले तो आप ये बताओ कुछ गैस पे तो नहीं रखे आए ना? कुछ है तो नहीं ना गैस पे? सेफ है ना? बिल्कुल। नाश्ता नुश्ता हो चुका है जी, आराम से बैठे हम। अच्छा, तो मतलब पंजाबी है आप, नाश्ते में ये तो हो नहीं सकता कि आप आलू के पराठे ना खाएं और यू नो फैटी नाश्ता ना हो। कैसा होता है रणवीर ब्रार का नाश्ता? रणवीर ब्रार का नाश्ता जो है ना वो पराठे तो होते ही हैं, अब यू नो ऑब्वियस सी बात है। मैं ये कहता हूँ कि हर पंजाबी मॉम जो है वो एक्सपर्ट होती है रिसाइकलिंग में। रात को जो भी बचता है वो सुबह पराठे में फिट होके चुपचाप आ जाता है मसाले मसूले डाल के। तो हमारे घर में भी होता है। सो पराठे इज ऑलवेज अ बिग पार्ट ऑफ इट। बट अदर देन दैट यू नो ब्रेकफास्ट में मैं जेन्युइनली बहुत फोकस करता हूँ और मेरा मील ग्रेजुअली कम होता जाता है। ब्रेकफास्ट इज द हेवीएस्ट मील ऑफ द डे फॉर मी। तो ओट मील होता है, पराठे होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, समटाइम्स यू नो सनी साइड अप होता है। और जब बहुत ही एक्सोटिक फील करने का मन कर रहा होता है तो यू नो इडली विडली आ जाती है उसके अंदर। अदरवाइज ये बिटवीन एग्स एंड परोठास इज वेयर रणवीर्स ब्रेकफास्ट हैपेंस।
बट यू नो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है रणवीर, आपको देख के चलो पता तो चलता है कि मतलब पराठे तो आप खाते हो, लेकिन पराठे आपको लगते नहीं है। मतलब हेल्थ वाइज यू आर सो फिट, कहीं पराठे का निशान नहीं है कि यू पुट ऑन वेट। क्या है इस पंजाबी का राज? आई मीन हाउ हैव यू बीन कीपिंग योरसेल्फ सो फिट एंड हेल्दी? देखिए, इसका जो राज है वो इट्स प्योर जीन्स, देयर इज नथिंग एल्स। इट्स जस्ट और दूसरा कि आप ना खाओ, मतलब टेस्ट सब कुछ करो पर खाओ कुछ भी मत। दैट्स व्हाट आई लिव बाय, यू नो, यू टेस्ट एवरीथिंग, यू ईट नथिंग, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, then you know you're a happy person, because वो आपकी सारी senses जो हैं आप satiate कर लेते हो, और without really taxing your innards, without taxing your gut. So father is an IIT कानपुर pass out. उन्होंने ऐसी क्या पहली चीज आपके हाथ की बनी हुई खाई थी जब उन्होंने बोला कि यार तुझे ना शेफ ही बनना चाहिए? नहीं, वो तो आज तक नहीं बोलते तेरे को शेफ बनना चाहिए था, but yeah, I think he's you know, but mom wasn't well and she soaked rajma. Raat ko mom had soaked some rajma, and I cooked them in the morning because she wasn't well. And dad, we have very Punjabi father-son relationship, which is very Hanji Papa ji relationship. Now you don't really talk much to your dad. So dad, I just he didn't say anything. He rajma खा लिया पूरा, और बाद में मैं जब साफ करा तो अंदर मॉम के पास गए तो कहते रोटी बना लेना है कंजर, you know. So that is how dads compliment sons in a Punjabi family, which was a compliment, and I took it as a serious compliment coming from dad. But he never agreed to. अभी भी आज भी बोलते हैं, अभी भी क्या रोटी बनाता है तो आजकल अभी भी बनाता है तो like that. तो आप भी कभी गुरुद्वारे की लाइन में लगे हो कड़ा प्रसाद के लिए? ताकि मतलब हम तो बचपन में ऐसा होता था, बंगला साहब गुरुद्वारे जाते थे और लाइन में हम बार लगते थे जस्ट फॉर यू नो दैट हलवा, जिसका स्वाद कभी घर में नहीं आया। आई एम श्योर यू मस्ट हैव आल्सो डन दैट एज अ किड। Yeah. बचपन से I was a Gurdwara kid. Dadaji used to drag me to the Gurdwara every Sunday, and I was very fond of where the action was, which is where the langar was made, and I was very fascinated कि यार ये लोग कैसे हैं, टेस्ट भी नहीं करते और इतना टेस्टी बन जाता है, you know, आप प्रसाद टेस्ट नहीं करते कभी। उसके बाद फिर मैं जब दिल्ली में आया, नया मैंने काम करना शुरू किया, तो सैलरी कुछ नहीं थी, 2612 रुपए सैलरी थी 98 में। तो मोती बाग में रहते थे, फिर मोती बाग गुरुद्वारे जाना पड़ता था, 15 तरीक के पैसे नहीं बचते थे रोटी के लिए। फिर वहां पर धीरे धीरे लाइन में लगने के बाद शर्म आने लगी कि रणवीर ब्रार तुम शेफ हो, कब तक ऐसे खाओगे फ्री में गुरुद्वारे जाके। फिर हमने वहां पे लंगर बनाना शुरू कर दिया अपने ऑफ डेज। तो देयर हैज ऑलवेज बीन दैट कनेक्शन टू द लंगर। We're talking about being safe, being healthy, being fit. तो हम ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि हम आपसे वो चीजें ना पूछे जो फूड से रिलेटेड है। एंड सो वी बेसिकली वांट यू टू रिएक्ट टू फूड मिथ्स दैट वी शुड बी स्टॉप बिलीविंग. You have to tell us, you know, how we can bust these food myths. So the first food myth that we have for you is Indian food is very spicy, hence it's very unhealthy. मतलब सब कहते हैं कि unhealthy है। Oh God, ये तो मतलब इसको तो समझाना भी इंसल्ट हो जाएगा इंडियन खाने की, यू नो। बट मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर दुनिया में किसी कल्चर ने सबसे पहले ये क्रैक किया है that food is the real medicine, it's our culture and Chinese culture. We are the oldest cultures that have cracked the fact that food is the real medicine. Our food comes from a place of healing. Our food comes from a place of nourishment, and वो सिर्फ मैं physical nourishment की बात नहीं कर रहा, emotional and spiritual nourishment की भी बात कर रहा हूँ। तो वो जो बेसिक रूट है हमारे खाने का, आयुर्वेद जो है वो खाने से जिस तरह जुड़ा हुआ है, ये इम्पॉसिबल है कि हिंदुस्तानी खाना अनहेल्दी है। जो ये स्पाइसी वर्जन है हिंदुस्तानी खाने का, विच इज जो भी अनहेल्दी नहीं है, क्योंकि जहां पर वो बनाया जाता है और वहां पर people need to sweat, you know, and that's why they eat spicy food. लेकिन what is important is to understand what part of India are you in, what grows around you goes around you, and always not force yourself on
the season, the place and where you are. ये इतना ही करने की जरूरत है, और ये तो मतलब कहने की भी जरूरत नहीं है कि हमारा खाना दुनिया में one of the healthiest and most complete cuisines है. Right. अच्छा, माइक्रोवेविंग फूड डिस्ट्रॉयज इट्स न्यूट्रिएंट्स, मतलब माइक्रोवेव में डाला तो मतलब खाना खराब. Well, it is not true. It is not true. It's yes and no. Personally, I don't prefer microwaves. मुझे ये लगता है कि खाना जो है वो हीट जो है हमेशा बाहर से अंदर जानी चाहिए. You know, that's how food is supposed to cook. Heat is supposed to permeate from the outside to the center. Microwave cooks the opposite. It starts from the center and heats on the outside. But nutrition खत्म हो जाता है और वो सारी चीजें. I don't agree. I think yes, the taste that you get with real cooking, you don't get that taste with microwavable food. But unhealthy हो जाता है खाना, ये तो गलत है. मतलब आप किसी भी खाने को एक टेम्परेचर के बियॉन्ड हीट करेंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट लॉस होगा ही, चाहे आप उसको कहीं पर भी करें. So you know, it's just the nature of food ना, कि गर्मी दोगे तो न्यूट्रिएंट्स लूज होंगे. अच्छा, देसी घी जो है, चलो खाने में तो स्वाद है, पर आप जितना देसी घी लेते हो उतना ही वो अनहेल्दी रहता है. इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर यू. आई एम स्विचिंग ऑफ द अरे मैं खुद पंजाबी में तो खुद देसी घी खाती हूँ. देखिए, ये तो सबसे बड़ा मिथ है. आप ये समझ लीजिए कि ये जितनी क्वेश्चंस ये हम पूछते हैं, पहले हम खुद से पूछने चाहिए कि ऑल आवर एल्डर्स हैड बीन ईटिंग देसी घी फॉरएवर. साउथ में कोकोनट ऑयल और नॉर्थ में देसी घी, उनको तो कभी कोई बीमारी नहीं हुई. दे लिव्ड हेल्दी, हैप्पी. तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट देसी घी इज अनहेल्दी फॉर अस? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन नीड टू आस्क. द सेकंड क्वेश्चन इज, इट इज नॉट what you eat in general, it's how much you eat. You know, and how much you can sort of take, how much can the body take, and that's the question you should be asking. अब अगर वो हमारे दादा ये बोलते थे कि भैया 2 छन्ने देसी के होते, पी जान देसी, राइट? अब वो उस समय वो खपा लेते थे. अब हम नहीं अपने बच्चों को बोल सकते कि हम 2 छन्ने पी रहे हैं, लेकिन वो 2 चम्मच डालने से कुछ नहीं होता यार. इट्स गुड फॉर यू. एक ह्यूमन जीनियोलॉजी है, हमारी जैसे जीन्स हैं, हमारी जीन्स के अंदर इनकोडिंग होती है, हमारी जीन्स के अंदर हमारा कल्चर और हमारा खाना भी कोडेड है. तो जब आप वो चीज खा रहे हैं जो आपके पुरखों ने बहुत टाइम से खाई है, तो आप एक्चुअली इन सिंक हैं, आप आउट ऑफ सिंक नहीं जा रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई एंड दैट्स व्हाई आई से, यू नो, मतलब देसी घी इज द प्रॉब्ली द हेल्दीएस्ट थिंग. डोंट ओवरडू इट. यस. अच्छा, फिश और मिल्क ये कभी ना साथ में मत लेना, बिकॉज़ इट्स नॉट सेफ फॉर योर स्किन. नो, इट इज नॉट ट्रू. इट इज नॉट ट्रू. बहुत कल्चर्स ऐसे हैं जो चीज में मच्छी पकाते हैं, चीज में सी फूड पकाते हैं. बहुत सारे कल्चर्स हैं which use that. दही में तो मतलब दोई माछ is such a classic in Bengal. तो ये तो मतलब लॉजिक नहीं बैठता इसका, जब आप देखते हो कि ट्रेडिशनली बहुत दुनिया जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ मच्छी बना रही है. अच्छा, ये तो हर पंजाबी घर में भी बोला जाता है कि यू नो व्हेन अ वुमन इज एक्सपेक्टिंग, उसको थोड़ा केसर खिलाओ, थोड़ा नहीं, उसको अच्छा केसर खिलाओ, सो दैट यू नो द न्यू बॉर्न इज वेरी फेयर, वेरी लवली. क्या है? सच है, पंजाबी ऑब्सेशन विद फेयरनेस, आई टेल यू. मतलब चाय मत पियो, काले हो जाओगे, हैं? केसर वाला दूध पियो, गोरे हो जाओगे. ये गोरे काले वाला पंजाबियों ने बड़ा काम खराब किया हुआ है. हाँ, बट मतलब इसका तो आई थिंक इट्स जस्ट अ गुड फन पंजाबी फैक्ट टू लाफ एट. इसको तो मिथ बस्ट करने की भी जरूरत नहीं है. It's just for all the Punjabis to laugh at themselves, like we are good, like we always do, and we are really good at. You know, Ranveer, I've watched so many videos of yours. You know, most of the videos, you know, that you've been uploading on Instagram. मतलब kitchen इतनी organized है, life इतनी organized है. Your kid is so adorable, even he is so organized. मतलब कैसे कर लेते हो? It's not at all easy. कैसे कर लेते हो आप? Everything is so organized. I'll tell you क्या होता है जब आप इतने साल ये मीडियम में काम करते हो, टीवी शो में, आपको पता होता है जो फ्रेम है ना, फ्रेम
ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उसके 1 इंच बाद सारा मैस होना चाहिए. बस you organize what is seen on the camera, and the moment you run out, that's your space to make a mess. So हम लोग का घर अब इतना ऑर्गेनाइज हो गया है कि हमारी माता जी भी पूछती हैं किधर शूट कर रहे हो, क्या फ्रेम है. सिर्फ हम फ्रेम ही रेडी करते हैं बस. चलो ठीक है, मतलब here तो you exactly like us. मतलब ठीक है, उतना ही बाकी चाहे कितना खलारा पड़ा रहे, कैमरे पे आएगा उतना ही ठीक कर. Right. Okay, Ranveer, you've traveled across the world, you've traveled to different nations. ऐसी वो कौन सी 5 food items हैं that people commonly mispronounce? They haven't really understood how to pronounce these words. Which are those food items? बहुत है यार. I think fettuccine is one. Fettuccine, so I think fettuccine is one. इटली में तो बड़े सारे हैं. Italian. कैसे बोलते हैं? फेटुसिनी बोल देना, लिखने में सी होता है ना, तो फेटुसिनी हो जाती है वो. और फिर व्हाट एल्स, वाइन्स में तो अक्सर ही होता है, like there's I have one of my best friends, he still calls her Chianti. Okay. So that is one that's so these are very entertaining looking at them from outside. Like the hollandaise, right? The sauce. So the most common Punjabi pronunciation that I get is hollandaise. Then na hollandaise. Like Holland the country has to come first. और क्या मतलब तो लोगों को कि पहले मतलब बोलना सीख लो, चलो खा तो ले, बोलना तो सीख लो. बिल्कुल भी नहीं. मैं तो खुद ही और यार ये किसी ने कोई वो थोड़ी ना बोला है कि जो अच्छे से बोल नहीं सकता वो खा नहीं सकता. I am not that sort of a guy. For me it is very simple यार. You call it whatever as long as it is what it's supposed to be. आप बोल दो, मेरी मॉम को आज भी एलेक्स बोलने को बोल दो, मेरी मम्मा एलेक्स ही बोलेगी. Right? Alexa is not Alexa, it's Alexa. है ना? So ये तो it's a function of the culture that you've grown up in. You just sort of have it as a humorous byline and move on. That's how I look at it. Ranveer, your life has been very inspiring. You've motivated a lot of people because of the hurdles that you face and how you emerged as a winner. You have also mentioned in some of your interviews that there was a phase, where you were hit by depression because things weren't really going as you had expected them to be. It's World Health Day today. A lot of people, face this. लेकिन उनमें ना courage नहीं होता है डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करने के लिए. What has that phase taught you as an individual, and what message would you like to send out to people who still don't have the courage to speak, discuss, and maybe get medical help? मेरे को ना मेरी थेरेपिस्ट ने उस समय यूएस में एक बात बोली थी. She said, Ranveer, depression is the common cold of mental illnesses. It's nothing more. It's just a common cold, you have it goes away, it comes back, it goes away. You got to be able to recognize it and take it for what it is. Don't really make it the objective of your life, and use that time to answer questions that you've always wanted to answer, and then just like the sardi jukham will go away, this will also go away. And I think that is something that I really want to pass on. So don't think of it beyond it being a common cold of mental illnesses. I don't want to make a big deal out of it, because the moment I make a big deal out of it, it becomes a big deal, right? And that's why I'm being very mindful on putting out. I think, well, first of all, you have to realize that ups and downs are a part of everybody's life. And nobody in this world is prepared for what's coming at them the next moment. Whether it's an earthquake or whether it's a tsunami, nobody in this world can say they are prepared for the next second. Nobody is, right? Which doesn't make you any more prepared or less prepared to face the world as anybody else. And I think it's important to sort of to just take depression as a state of mind and at its face value, and not really make a big deal of it. It's very important to do that. Is there any song that you hum while singing, Ranveer? We've never heard you sing any song. Is there anything that you would like to sing?
बड़ा यार मैं बड़ा खराब गाता हूँ, भाग जाएंगे अरे लोग। अच्छा अरे नहीं इसलिए आपने लास्ट में रखा है कि चलो अब भाग भी जाएं तो कोई। बट एक गाना था ना वो इज वन ऑफ माय फेवरेट्स के, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना. So yeah, it's still my favorite song. It's my morning. Thank you so much, Ranveer, for taking time out and for speaking to us and for sharing those lovely anecdotes, messages that you have for your fans. Thank you for your time today. Well, thank you for having me over. I had a lot of fun. Didn't even feel like an interview. It just felt like a breeze. Awesome. Yes. Thank you so much. Take care. Bye.